Kandhmal is a land of stark contrast. On the one hand, the greenery and the low clouds caressing the thickly forested hills greet you once you arrive into Kandhmal district. And on the other, deserted villages and burnt houses narrate the story of unprecedented human tragedy. The residents have fled the worst communal violence Orissa has seen. Orissa is in trauma. The unprecedented communal violence that gripped Kandhmal and 7 other districts is a blot on the secular, democratic, pluralist ethos of India. What followed as a result is simply catastrophic, difficult to capture in words and unparalleled in scale of ruthlessness and barbarism. What followed as a result is simply catastrophic, difficult to capture in words and unparalleled in scale of ruthlessness and barbarism. More than 50,000 people were violently displaced. 6,000 homes have been ravaged. 150 churches and institutions razed to the ground. 75 people killed, including those burnt alive. The women could not escape from the rapists, who forgot all human values and gang raped them. Many are still missing. भारत माता की जय। हिंदू हिंदू भाई भाई हिंदू हिंदू भाई भाई यार बड़ झील मकबाल रे बाई मु जाइकी आसुली आसला सरकू 8टा राति हम नारायण बस बस नाला मत अधा बाटू से विजाती उड़िया मैंने जबरदस्ती मत टाणी नहीं कर से जीशु को जमती ने दी हाथ एमती धरले जूतार दौड़ी बांधले तापर दौड़ी कर मत विविध माड़ मारे मारिक मत 5 तारीख दिन थाना जेल कले मु 3 टाइप देली मधु एफआर ग्रहण कले ना प्रकार केमती नहीं एफआर मु सारंगड़ देली जाकि हाईकोर्ट रे देछि कोटक रे हेले मधु काम हला people are being attacked even now there is no security in remote villages one cannot live. We asked to the collector that can you are asking the people to vacate the relief camps and to go back to the respective villages, can you provide them security? They told it's not possible physically to provide static forces to all. Then we asked about the mobile forces, can you provide mobile forces? No, even we cannot provide mobile forces to all the villages. So if the government representative, they are telling themselves that we are not able to provide security. And it happened also. It happened. The killing continued for at least for 3 months, 90 days. There was nobody to
protect them. Dalit tribals who choose to become Christians. In fact, the state machinery, updating its own responsibility, has facilitated and furthered the violence and given the lumpen elements free hand to do whatever they wanted. Communal violence is not new in Orissa, and Kandhmal has a 40-year history of Hindu fanatics attacking pastors and village leaders at will. They went on to attack and burn 19 churches as early as 1987. But this is, by far, the most violent, brutal and widespread incidents of communal attack in the history of Orissa. किंतु आज भारत वर्ष में ओडिशा राज्य में केवल ही दलित लोक जो मैंने ख्रीष्टधर्मी लोक से अत्याचार होती उच्चवर्ण लोकों यह अत्यंत दुखदायक घटना ये निर्दिष्ट भाव में हिंदुत्व को रक्षा करने संघ परिवार एवं संघ ये घटना घटी. It didn't happen overnight. The groundwork for these attacks was laid as far back as the 1920s, when communal organizations took root in India. Communalism has found its public articulation in the expression of hatred towards minorities and violent attacks against these minorities. The hate campaign waged against Dalit and tribals who chose to be Christians by the proponents of Hindutva acquired a monstrous edge when an Australian Christian social worker and 2 of his children were burned to death in Kyonjhar district of Orissa on the night of 22nd January 1999. Since then, the communal trajectory of Orissa has very closely followed the Gujarat prototype. RSS was established in 1924 and they are completing 100 years. So they have a target and accordingly they have strategies, actions to convert India into Hindu Rashtra in 2024. And as a part of that target, that mission, they created Gujarat program and also they created Kandhmal program. After Gujarat program, they declared that Orissa will be the second poster state. And in 2006, there was a big gathering of RSS to celebrate the birth centenary of one of their leader, Jholawala, in Kandhmal. Lakhananda was the key person to organize that celebration. They mobilized about 3 lakhs of people from different parts of country and also outside country. In the celebration they declared Hindu nation is not far from now, and by 2008 we will make Kandhmal free of Christians. We will wipe out Christians. That was in other words, it goes like this. At least by 2007, 10,000 people, Christians will come back to their original home. Hinduism, Ghar Wapsi. The violence was triggered on the evening of August 23rd. Vishwa Hindu Parishad leader Swami Lakshmananand Saraswati was killed by suspected Maoists at an ashram in Jalaspata in the Tumudibandha area of Kandhmal. By the next day, violent reprisals were being carried out on Christians across the district. आमे तमर किछि अनष्टि करिनु आंटू पुत्ती की तांकर गुड़ो मुंडिया मारी किया का एक प्रकार
तमर किछि आमे भय करिनो तम भूल करिनो हमको ए प्रकार दंड दउछ जे भूल करिछ ताको हले दंड देबो पुणी मो तोड़ हे कि गला एमती देखला मते सिंह बळे दाई आसला या कत्ता नाई वार्ता नाई किछि ना आसी तो बाड़ी छोड़े देला म कोन ए रीति मोर बळ नाई आ एमती थिले मु एमती करबो एते पिटिला एते प्राय 10-15 टा बाड़े रे पिटिला तापरे एते पिटिला एते पिटिला ए गोड़ रे एमती एते पिटि देला पटस छिड़ी गला से हां आड़ ऊपर बाहरला रक्त जे रक्तमय है कि रखी ए प्रभु रक्षा कर बोले से सुनिबा को ना सेठी तारिणी मंदिर जे पूजक से पुलिस बाला बाला तो ए दंदा पाई गाड़ी लगी ना से 44 जारी होता सी फोन करदे जमी पुलिस जन 2 जन आसे ड्राइवर जन पुलिस जन गाड़ी देखिले मत से मोर झील जुआई आम नाती नातुणी सब धाई बापा मरीगला मोर साटो पाटो ना काले रक्तमय से पुलिस गाड़ी जमी पहुँचला सी मैंने मत पचारे किए से लोकटा जानव जाऊँगी आज्ञा मोर तो चेता उड़ी जाओ देखु बोल दाईकि से एति जाइला धरिकी आसिले बसैले गाड़ी आग काटी बसैले मत पचक डाक्टर इच्छा तो कौटे काटिले कौन हम जानी आड़ तो ऊपर को बाहर था ना सेमती जदि सी भल करने तार साहस था बोले करता तार साहस पाइना बोले काटेदेला करके आसिले जय श्री राम भारत माता की जय बोली पार्टी करू से शुणलु जमी आम घर द्वार छाड़ी पलैलु दौड़िलु The Sangh Parivar organizations successfully experimented in Gujarat with a series of religion-centered programs. Their aim was to create religious solidarity on the one hand and religious antagonism on the other. टीवी थी लगे से टीवी सब पुराई दे आउे गोटे कठ थिला एटे गोटे कठ थिला बड़टा एटा सब पुराई दे आउे गोटे टीवी रखी सेटा सब पुराई दे आंटीना फोन पेन एटा सीडी डेक सब एटा पुराई दे एटे गोटे सिंधुकटा थिला बड़टा सिंधुक एटा सब पुराई दे धान थिला सब थिला आउे गोटे धान पेड़ा थिला इे सब एटू लगी सब पुड़ाई देते एटे डुली धान थिला सब पुड़ाई देते एटे गोटे बाड़ी थिला बड़टा एटे उपरे सेटा पूरा काठरे सेटिंग होता आम ऊपर पटे जाऊे एटा गोटे कबाट एटा गोटे कबाट सब से ये कर देते पुड़ाई देते मेन लीडर किए कहले हम मेन लीडर कौन है तू टिकन काम कर हम टिकन काम कर तो छाड़बुन कौन कर मत आज हणा हम हाँ तू टिकन काम कर कि हाँ मुझे हाँ करू कहले आज तू बेसी करी बोले कहले चेप पकड़े चुमन कले बहुत चाकरी मारिदेले तू पूरा परीक्षित नहीं करे काली ना शुणी तू तो तू पूरा परीक्षित नहीं करे से मैंने लगन दे चेप पकई हंसिले के कौन कले पछपटे जाकि मुंडे मारिदेले जो मुंडे मारिदेले हाली लुए कहकर पड़गले मत छाई पड़गले जमी पूरा एत माटे मारिदेले तो गोटे रक्त झरला पटे सैड्रे पलटिले से मैंने रक्त काटिले धरले जो काटिदेले से पूरा पड़गले बेकर सागे सागे हाणीदेले 2टा गोट हाणीदेले हाथ गोटे हाणीदेले जी जोटे हाणिले सागे सागे किरोसिन पकई जालिकी से मैंने टिया कासिले anak kiseka enggak agor rogo sene enggak Islam sama enggak biroda jana gati te adhingya te giana gati lagi tarunar sano teru bam janar ta teru asan te hindia जंगल में रही 7 दिन सात दिन हाँ
माने जो दिन भांगी थिले तापर 7 दिन जंगल रे हां भांगले को दिन आइगा से दिन ठारू से साई को गलु से साई गुटे विश्वास लोक लाको अछती बोले एका सारे काम करू तू मुलिया जाऊ तू कोन करछु से माने एरी तोबला बात देवा को सीता आलू बाटी को मते खाइले 7 दिन जागा से माने देले अच्छा एबे नहीं आया 100 दिन देले 100 दिन 7 दिन आसलो हमें एडी आसिलो आसिला आलू तो किछि नथियो खाया पिया पे सब किछि नहीं या कोन करलो किछि नहीं तीर रोइलो आरो काटो नै लै कुछि को अच्छा काटो नै गलु छिल्लु तीरी करे बुई को नेलु Thousands of people escaped to the forest and stayed there for days in order to save their lives. They moved to the relief camps, but got little respite for lack of basic facilities. Most were forcibly sent back to their destroyed homes and villages by the state, which was in a denial mode. They are now doomed to spend their lives in makeshift tenements. Orissa is yet another example of the failure of the state to contain communalism and fundamentalism and the incitement of hatred by extremists. चारि मास होला टिटी गोटे ले पाई नाही आ मते एबे टिटी नेबा को भी पैसा दरकार गां को गले एटे अंगनबाड़ रे ले जाई पारु न काई के बोले भय करू छु सेठी आसो नाही कहू छंती सेठी सेति पई एबे मते पैसा दरकार हेले मु कोन करबी मु किछि जानि पारु ना एबे मु जदि मेडिकल जीबी मते विटामिन रो खाइबा को कहिबे काई कि ना मोर ऑपरेशन हेछि ना एबे मध्य सही प्रकार का ऑपरेशन रे का पिला मोर हेबो सेति पई मते डॉक्टर कहिबे एबे गले फलमूल खाइबा को विटामिन रो कोन टॉनिक औषध कोन खाइबा को सेति पई मु एबे किछि मो पाखरे पैसा नाही बोली जाई परना कि मोर स्वामी किछि करू ना काम मोर ससुर भी नहाती मोर सासू जने अछंती काम मिलु नाही कि घर नाही कि द्वार नाही किछि नाही कोटे रहिबु कोन करिबु एबे 2-3 परिवार एक गुटे रूम रे अछु केंती एबे डिलीवरी हैला समरे केंती रहि पुनी सेटे बोडा देई कि रहउछु सर ता भीतर प्रवेश कला बेले देखिलु जे अत्यंत खराब अवस्था से माने काला काटुचंती कंसंट्रेशन कैंप ठारू माने अधिका ठीक समय खाइबा को नहीं ठीक समय तांको पिंधिबा को दिहाइनी तेल साबुन अभाव माने मशा माछीर प्रादुर्भाव सेठी डायरिया लोक पड़ी गले किछि नाही माने अत्यंत माने पशु पक्षी गोरु गाई मध्ये सेठी रहि परिबेनी आ गोरु गाई को सहित मनुष्य सेठी रहउतले बेसी असुविधा हला तेल साबुन किछि पाइलुनु लुगापटा किछि पाइलुनु तापर हमर सब पुडा पुडी कर देले बणरे रहिलु तापर खाइबा बिपा किछि पाइलुनु गुड़ेवा पाई बेसी कष्ट हैला वर्षा आसुथिला से समय बणरे कांदी कांदी रहिलु खाली प्रार्थना करिकि रहिलु आ 13 तारिख सकाळ जिमती राति पाइला आ सकाळ आसिकी आमको कहला आ तमे घर को जीवा को हेबो आ तम पंचायत रे शांति आसिला शांति फेरिला आ तमे एटे रहिबा को हबो ना आज्ञा आम तो सुनवा को पाऊँ एमती कथा होती आ गाँ को फेरिले आमको मारे आ जीवन रे मारे आमको काठ देवे ना और पानी देवे ना खाइबा कमी कौन पाइबू आम जंगल को जापरूँ आम आ बाहर को जापरूँ आम एकला एकला बुली पार्बू आमको किए साहय कर आम प्रशासन दियो एमती कहबार ना मु प्रशासन दे पारबी नहीं तमे जीवा को बाध्य तमे जीवो The media call them riots, but it is unilateral assaults on the life and property of hapless and poor Dalits and Adivasis who chose to become Christians. They were incited and executed by the members of extremist Hindu communal organizations. Neither were they sudden nor spontaneous. Behind them is a fascist national organization whose careful planning of years has demarcated and isolated the minorities. Their plans were part of a larger political scheme, imparting an exclusivist Hindu identity to the nation. Their ideology is one nation, one culture, one people, to promote unity in uniformity at the cost of unity in diversity, the long-cherished ethos of our nation. कि एबे पुलिस जगु नाही कि एबे आमे बेसी डोरी कि रहउछु एठी आउ आमे गां छाड़ी के आसी छु छना और रिलीफ कैंप उठाई देले आ एठी
कुआड़े गाँव रे तो जीवाई आम को मना करूँगी एटी आसिले हिंदू हेले एका रही ना बोलुंट बोले आमर हिंदू हेबार ना बर मरीजु सेना हिंदू बुनु आठी केमती जीव आम बेटी कला लिंगागड़ कौतलु माँ पंचायत लिंगागड़ पंचायत सुरक्षा किसी ना कोर्ट को जीव कौन कर scheduled tribe, they were considered to be outcasts, untouchables. Their growth is the credit of the Christian missionaries, the outside. And this is something the world has to acknowledge, the government has to acknowledge. We must be grateful to the Christian churches for what they have done for the development of these people, which they don't like to see. जे आमर एते बढ़िया संविधान अच्छी किंतु ठीक से समय ये गला 6 मास भितर ये समस्त भूली जाइए जे संविधान धारा 25 रे अच्छी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस प्रोपागेट एंड प्रैक्टिस रिलीजन ये जो तिक्त अनुभूति मु जानिली खाली एवं अन्य जगह भी तथ्य संग्रह कली खाली जी उदयगिरी नुहे समग्र अंचल कंधमाल एभली सब अधिकारी ऑफिसर कर्मचारी मानक सब दायित्व दिया होता परिस्थिति को संभालिया जो माने कि जो मानकर संख्यालघु संप्रदाय प्रति दरद नथिला जो माने विक्टिमाइज्ड होउतले माने अत्याचारित निर्यातित एवं हिंसाकांडर शिकार होउतले तांका प्रति दरद नथिला केवल ऊपर जहाँ निर्देश आसीबो एवं सेमाने जेमति कि गोटे कथा अछि एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्रॉट ए क्षेत्र में देखिलु एवरीबॉडी लव्स ए गुड राइट तापरे आ गोटे तिक्त अनुभूति सेटा मु बारंबार अनुभव कली सेठी जे कौन बाहर लोक को से कैंप भीतर प्रवेश करने अनुमति दिया होता जमती गोटे कंसंट्रेशन कैंप कौन मीडिया पर्सन को अनुमति दिया होता एपर्यंत राज्य सरकार गोटे श्वेतपत्र बा व्हाइट पेपर बाहर करले। Fear was apparent on the faces of Pratap Diggal and Abraham Naik when we met them hiding in the Kandhmal forests. The two Christian Dalits were forcibly reconverted to Hinduism just days ago. They were given two choices, reconvert or be killed. They told me it was a Hindu Rashtra and it's the English who would practice Christianity. They said, you were made to leave the Hindu faith and convert to Christianity. Now you will have to convert back to Hinduism because this is a land of the Hindus. After a quick conversion ceremony, their heads were shaved off and they were made to write on a piece of paper that they would now live as Hindus. As a final touch, these Hanuman lockets were tied around their necks. Right to freedom is something for us because I would say now people are not allowed to stay in their village. All Christians are eliminated from their villages. They are chased. And those who are interested to stay in the village, they are compelled to become Hindu. Becoming Hindu is not enough, but also they have to practice all the rituals. They have to go to temple, they have to eat daily, all these things. So, stay in the village, in our own land, as per the constitution, staying all over the country, it is our right. Right to freedom, we can trade, but we have lost. किए ना दुकान मना कर दउछंती पानी मना कर दउछंती हमको टंडाइले 1051 टका पाउछंती तानकर आमे को परिवार को कुआड़ के जाई पारुनु आमे खाली का रहउछु पानी कोन बना करछंती पानी बोलले नार पानी गाधैबा को मन ना खाइबा को मन ना सरकार देइथिला हमर सगारे नळको गुटे सेटा खाउछ अनेक पिला परीक्षा दे पालेनी ठीक समय गोटे वर्ष से माने नष्ट कले गाँ को जो माने जो झील बहु फेरिले तांको बाटर मध्य हैरान करागला एमती मानविक अधिकार आम जहाँ को कहू खाद्य बसवास शिक्षा स्वास्थ्य निरापत्ता सबू दिगरु मानविक अधिकार उल्लंघन गोटे कथा कहबी Who says that terrorists are only those who plant bombs and carry guns? This was a terrorist attack on Orissa. What about these Sangh Parivar members who've been given the license to kill, destroy and plunder their fellow citizens? This is sheer terrorism.
सेठी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या गोटे लक्ष्मणानंद ओडिशार नहांती 1000 रु अधिक लक्ष्मणानंद अच्छा हजार हजार लक्ष्मणानंद अच्छा से गोटे लक्ष्मणानंद कौन ठिका नहीं थे जे केवल हिंदुत्व को रक्षा करने आज के 11 वर्ष है ओडिशार मुख्यमंत्री महोदय नवीन पट्टनायक सरकार केवल ही दलित लोकों ऊपर अत्याचार होती आदिवासी लोकों ऊपर अत्याचार होती आपण कलाहांडी लांजीगड़ ठार आरंभ कर एपट्रे कलिंगनगर पर्यंत आदिवासी एवं दलित लोकों ऊपर अत्याचार कराई हत्या कराई विशेष कर यार नमूना नवीन पट्टनायक रुकी पारे ना जे कंधमाल जो दलित लोकों ऊपर अकथन अत्याचार है 25 लोक हत्या कले आज पर्यंत लोक कंधमाल को फेरी ना an ideology that want to perpetuate and dominate the Dalit and tribals for centuries, treating them as second-class citizens. All civil societies, members, academicians, people those who are concerned about human rights should join hands to fight against this casteist fanatic forces so that every Dalit and tribal will have the freedom to choose the religion they like to and live to in a just and dignified manner. Because we are the people who came here with the greatest zeal to work for the people. So whatever may be the obstacles, we are sure that we can overcome all the obstacles. Because even if we have to die, there is nothing for us to look forward or backward. We came with one purpose to serve the work for Christ, and that we will do it, whatever it is. These fascist forces are united like this, and the democratic people are scattered like this. So this is the basic point. Simply what we have to do is we have to try to hang together and ensure that these things are taken down to as much as possible. It is a very tough time, but this is also a time all liberals and seculars, they should unite. Liberals from all religions, they should unite. And we should speak up brotherhood, we should speak up fraternity, liberty and secularism and democracy. So no modern state can live without diversities. In the prevailing circumstances, the return of peace and harmony in Kandhmal is unlikely unless the government makes its presence felt at all levels of the administration and solves the problems of the poor among the tribal and the Dalit population. The only fitting reply to communal forces is Indian diversity. The strength of India's secularism and democracy is the diversity of its society. We cannot afford to forget this ever. हिंदू हेले मिसा भगवान ख्रीस्टान हेले भगवान ताकर गुटे जीवन बोले बापा गुटे मनुष्य बोले गुटे से थोपात नहीं